Ravi Urban Development Authority Funds 34. The authority shall establish a fund to be known as the Ravi Urban Development Authority Fund, which shall vest in the authority, जो authority के अख्तियारात हैं इस fund में वो कर सकती है, and shall be utilized by the authority in connection with its function under this act, including the payment of salaries, जिसमें salary शामिल है, तनख्वाह शामिल है, पेंशन शामिल है, एंड अदर्स रेम्यूनरेशन और दूसरे मराआत टू द मेंबर्स, एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स ऑफ द अथॉरिटी. द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन मेड बाय द गवर्नमेंट. अब फंड किस पे होंगे जी? ग्रांट एंड सेल जो कि गवर्नमेंट करेगी. All money received from federal government or government in the form of loans or any international agency by way of grants, donations, loans, advances or revenues from joint venture, outsourcing agreement or otherwise. All fee rates and charges received by the authority under this act, all money received by the authority from the disposal of land, buildings and other property movable and immovable, proceed from the self-financing schemes of urban development and environmental sanitation, and all other sums receivable by the authority. The aforesaid sums in respect of services relate to water supply, sewerage and drainage shall be credited separately to the head water supply and sanitation, and all other sums to the head Ravi Urban Development. The sums credited to the head water supply and sanitation shall be exclusively utilized for the purposes of water supply, sewerage and drainage. In case of a deficit revenue, अगर revenue की कमी पड़ जाए, deficit होता है कमी होना, of the authority, the government shall proved loan, तो government मंजूरी दे सकती है कर्जे की from its own revenues or from any other sources, या तो सोसाइटी का अपना ही कोई रेवेन्यू होगा या कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट. द अथॉरिटी में कीप इन करंट अकाउंट ऑफ एनी शेड्यूल्ड बैंक such sum as may be determined by it, and any amount in excess of the said amount may be invested in the investment schemes of national or international institution, or may also be invested into government securities, government sponsored saving scheme, or in such manners as may be determined by the authority. For the purpose of this subsection, government include federal governments. Rate and fee. The authority may raise adequate funds, जो मुनासिब फंड हैं, ज़रूरी हैं, वो रेज कर इकट्ठा कर सकती है, टू मीट द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अखराजात के लिए, एक्सपेंशन उसकी वसअत के लिए, एक्सिक्यूशन, डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट दोबारा दर्जा बंदी करना, डेवलपमेंट मतलब है तरक्की करना और रीडेवलपमेंट दोबारा तरक्की करना, मेंटेनेंस, जोनिंग, क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन, आगमेंटेशन इजाफा करना, सुपरविजन्स, रेगुलेशंस एंड कन्वर्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्कीम. अब किसी स्कीम, फ्यूचर स्कीम के लिए उसे इजाफा करना, उसमें एक्सपेंशन करना, एक्सिक्यूशन करना, उसे बेहतर करना, डेवलप करना. रेगुलेशंस एंड कन्वर्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्कीम
एनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकती है जी। Conversion of any property or any present and future schemes or any part of the scheme by imposing rates, fees, surcharge, other charge and fine in the prescribed manner within the area. The authority may in the prescribed manner impose fee on change of land use owing to classification and reclassification. कि यानी दर्जाबंदी है या दोबारा कोई दर्जाबंदी करनी है तो उसके लिए कुछ चार्ज लगा सकती है, फी लगा सकती है। The rate, fee and others charged for the water supply, sewerage and drainage scheme shall be used as to provided sufficient revenue to cover the operating expenses including taxes, if any, and interest to provide adequate maintenance and depreciation, उसे मेंटेन करने के लिए या उसमें कोई कमी आ रही है, नुकसान हो रहा है, डेप्रिसिएशन खसारा हो रहा है, टू मीट रीपेमेंट्स ऑन लोन, टर्म इंडेटेडनेस जो कि कर्जा लिया हुआ है उसकी अदायगी के लिए, टू द एक्सटेंट दैट सच रीपेमेंट सक्सीड इन द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टू फाइनेंस द नॉर्मल ईयर टू ईयर extension of any of the such schemes and to provide a reasonable portion of the cost of future major expansion of such schemes.